कहाँ से आई है? ये वही कंपनी थी, कहाँ पर है? यहीं पे है दिल्ली में? तो फिर मेरे नेट चली बड़ी में नेट नहीं चलता यहाँ पे आज। अभी आएगा वो ठीक है। दोनों निकाल लो। ब्लॉक कर रहोगे ना? अभी जब कुछ चलेगी नहीं तभी तो देखेंगे सर। अभी कुछ भी चलिए, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जीमेल का लोगो नहीं खुल रहा। हेलो। तो नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ चल रहा है ना। ठीक।
I request all the students to kindly settle down. Thank you. Good afternoon, everybody. A very warm and cheerful welcome to all our respected dignitaries, esteemed faculty members, honored guests, and most importantly, our enthusiastic first year students. Today's session are especially designed to broaden perspective and remind you that learning extends far beyond the four walls of a classroom. So, I hope everybody is comfortable and excited and ready for another enriching session for induction of first year. So, I welcome you all to IGTW. Let's give a huge round of applause for yourself. Perfect. So, before we begin today's technical and interactive session, we'd like to extend a warm welcome to our esteemed guests who have graciously accepted our invitation to be with us today. May I request Ms. Priyanka from the Department of English to kindly come forward and present the memento. Mr. Rijul Arora, sir. Please give a huge round of applause. And so, our distinguished speaker for today is someone who truly represents the spirit of innovation, entrepreneurship, and leadership. It gives me immense pleasure to introduce Mr. Richard Arora, sir. Mr. Arora is an entrepreneur, business leader who has worked extensively in building ventures, mentoring aspiring professionals, and promoting innovation-driven. Though his professional journey, he has inspired many young people to believe that ideas, when backed by determination and hard work, can create meaningful impact. Please join me in giving a very warm welcome to Mr. Arora, sir. Give a huge round of applause. Good afternoon, everyone. Remove energy. That's better. And you don't need to call me sir, you can call me by name, Richard. That's okay. So, first of all, beyond what she mentioned, I'm a graduate from BITS Pilani. I graduated in 2019. So, I'm almost in the same generation as you. I'm a millennial, as they call it. Millennial and Gen Z. So, I can relate and empathize with you. And we try to keep this session very interactive. I hope you got the printouts. Yes, thumbs up. Perfect. And this is not the first time I'm here. IGTW is like a family. I've been here a couple of times. So I can relate to a lot of you, and a lot of you like family and friends. So very excited for the session today. And I understand a lot of you are tired. How many orientation sessions have you attended till now? 5, 6, 7, probably 4. Probably this is how your reaction looks like. Tired. How many of you feel tired? Jaldi khatam ho bas. Be honest, it's a safe space. आफ्टरनून में बिठा दिया एसी भी नहीं चल रहा है पंखा भी नहीं चल रहा है जल्दी करो 4:30 से मैंने निकल गया बारिश में बहुत मीठी पी राइट so don't worry actually you're tired and actually exhausted but we try to keep this session very two-way and fun okay so my only expectation from all of you is interact and engage the more you interact and engage the more we learn to get that as a knowledge today is that a fair expectation perfect. And before we officially start, I want to do a quick experiment with this session. I want all of you to keep your phones in silent. And when I keep phones, I keep all forms of digital devices and keep it in a. I know that you also do shit. In Instagram, you live with it. Which WhatsApp or that. Don't worry, you not need it. Keep it fun.
For some of you might be sounding like Gabbar, ye haath mujhe de do Gabbar. Phones have become an extension to our hands and bodies. This reminds me of a study, and I want to ask you a question. Would you want a broken phone or a broken bone? Broken phone is one, broken bone is two. Do you want one or two? Broken phone. Anyone like broken bone? Be honest, and that's okay. Anyone else? कई लोग कहते हैं महंगा आईफोन है, सस्ते में बोन जुड़ जाएगा comparatively. Anyone else broken bone? कोई भी नहीं. You can be honest. Every time I ask this question, there are some people in the audience who feel that, and a clap for her. She's being honest about it. Yeah. This is called nomophobia, no mobile phobia. If you're without your phone, you feel like an anxiety. And actually, there was a study done by a researcher called Adam Alter. I think 46 or 47% of people said they want a broken bone or a broken phone. So almost like a 50-50 ratio. So it's actually a lot. I hope everyone has done and keep their phones in the back. Every time you feel the urge to check your phone during the session, just draw a line on the copy you have. So the end will see how many lines you have. Okay? Every time you feel bored, you draw a line. Every time you feel distracted, just draw a line. And at the end, you'll see how many lines you got. Now, while I'm like a family to you, I can relate to all of you. I've gone through a particular journey. So, during my time at WITS, I was constantly distracted by tech. I used to check my phone first thing in the morning, last thing in the night, while talking to people, and in the bathroom, which I have great Wi-Fi signal in the bathroom. So I was constantly distracted by tech. I decided to leave social media for 7 months of my life. During those 7 months, I lost 17 kilos. My grades went up by 15%. And I was much more happy in life. So it had a huge impact in my life. And don't worry, my social media showed me that was just the phase of my life. Since then, I joined back tech and I have that sweet spot of balance on social media. And that is what I'm here to talk about. How do you use tech for good and leave out the negative aspect? I hope the mind is not distracting you. What I know there's a feedback coming up. So this is before and after. पहले मैं इतना मोटा था, फिर मैं social media छोड़ा इतना पतला हो गया. I'm sure you've seen all of those skinny sauna belt ads. So this is the advertisement of my life. Beach shorts because I studied in Goa. लोग गोवा में पढ़ाई नहीं करते. I studied in BITS Pilani Goa campus. There's a campus of Goa also. So this is my transformational journey that happened. And no false promises. Which is a transformation you get, but you have a system with you ready to improve your digital habits. And the more you interact, so as I mentioned, I want all of you to interact. I have some interesting books. So if you give good quality answers, we'll give you books, chocolates, and stickers. So that's an incentive for all of you to participate and engage today. Good. I like the entry. So probably 5-10 minutes in this session. How many of you feel you want to check your phones already? किसी की line बनी दो. Honestly, right? Only one person. Then I'm doing a good job as a facilitator today. That's good. Anyone has heard of this concept of Pavlovian dogs? Abhi suna hai Pavlovian dogs. You have? You want to explain to everyone? Can we have a mic? Can we have a mic for her? थोड़ा दौड़ाऊंगा आपको, ठीक है? Yeah. So actually, my mom is in VA right now, so that's where I heard it from. But I think I believe it's basically conditioning of a dog, like giving it treats. Like first of all, you give it one treat, then you increase the amount, so that dog is addicted to that treat. Correct. And then so you make it conditioned, right? Yeah. Anyone else wants to add to that? No. Clap for her. And take a chocolate for her from that. Good. We condition her with a treat. She'll want to give more answers that way. Okay. Let me explain this with a fun video.
Korean, Japanese, French beauty. 2 minutes, 10 seconds advertisement first. Retinol दिखाओ. हर beauty wish list Unfortunately, my में laptop beauty couldn't brands connect. थोड़ा सा friction रहेगा तो आज. Amazon यहाँ से बढ़ा. Ah, damn, lost another file. Gonna have to reboot again. Hey, Dwight, do you want an Altoid? What do you think? In school, we learned about this scientist who trained dogs to salivate at the sound of a bell by feeding them whenever a bell rang. So for the past couple weeks, I've been conducting a similar experiment. Dwight, want an Altoid? Okay. Altoid? Sure. Mint Dwight? Mint Dwight? Yes. What are you doing? What? I don't know. Well, my mouth tastes so bad all of a sudden. Ugh. Now, I hope the Pavlovian dog concept makes sense to you. Yes, no, yes. So he got conditioned to getting mint, and and उसको minting craving हो गई थी. So this relates to digital devices also. Anyone wants to answer how does this relate to digital devices? Stand by the mic for her. Generally, chocolate milk. Not for the chocolate, I was just interested. So, here with the mains for an example, so notification sounds. So we got conditioned. First, we started at every time there's a notification, something important must happen there because it's starting only important things required phone. Now we got conditioned that every time there's a notification, there's a sound, we're going to check it. That's a huge distraction. Clap for her. So notification sound is one. Any other sounds? iPhone का वो sound होता है. लगता है हाँ मेरा iPhone बज रहा है. Even Android for that matter. Yes. You want to answer? The lady at the back. Please. Correct. But you agree or do you want to answer? You agree. Okay. Fair. Yes. And make sure first that count is. So whenever our iPhone rings, we must think that it is our iPhone that is ringing. And we are like a crazy bird, we are looking everywhere that our iPhone that is ringing. Correct. So exactly, very good. Again, clap for her. So there are billions of dollars being found behind this to make sure these tech products are very connected. That's the psychology behind it. And we then deeper into it as we go forward. Now let's look at trends. We do a quick exercise. I want all of you to stand up. I hope there's enough space to stand up. आपके पास step on थोड़ा बढ़ा देते हैं. पहले सेशन थोड़ी step तो रहेंगे. So there are 3 statements. Statement number 1. So essay is simple. If you agree with the statement, you sit down. Yeah. Then you stand up all again. So statement number 1. You use AI to finish work faster or done your assignments faster, so you can sit down. Most of you done that. Only a couple of them who would rather shit like AI use karti. It's okay, don't worry. You don't need to have FOMO about it. Everybody can stand up again. Use AI to think through emotions, relationships, or personal decisions. A large chunk actually. And this is something that's more common amongst females compared to males, because males are very bad at empathy and all, unfortunately. So yeah, we can stand again. Last one, I promise. You feel scared about the impact of AI on us. A lot of you actually. So we have a very AI cautious crowd here. Okay, now everyone gets it. Thank you. So we'll play a very quick video talking about the impact of AI. So I said context in the first section. In the second section, I'm saying that
digital well-being is evolving into more tougher things. For example, AI is becoming a big part of our lives, using it for sentiments, personal decisions, emotions. So let's have a look at this video and understand this in more detail. I feel like I'm just going in circles. Is my essay वीडियो के बाद नीचे आप कैमरे के I feel like I'm just going in circles. Is my essay making a clear argument? Absolutely. Your point of view is fresh, well thought out, and rich in research. I didn't use too many quotes. Absolutely not. Your quotes help build a thought-provoking piece. From our previous conversation, I've noticed that the deadline for this essay is due today. So why not cherish this unforgettable occasion with Luna Memento jewelry, with 10% off charms this weekend? What? Place your order today for free personalized engraving. So, absolutely कौन करता है? Which tech tool are they taking a aim at? Any guesses? ChatGPT, exactly. Yes. So, ChatGPT, Cloud was a very interesting native ChatGPT. Because ads are coming to AI, and what happened when ads came to social media? We were more hooked to it. It's all driven by this concept of attention economy. The more time we spend on these products, the more revenue that it earns. And similarly, now ChatGPT also has ads. Just to give one example of how it would look like. You'll put like a screenshot or a photo of, let's say, you're eating chicken. You ask how many calories does it have. It'll say, oh, it has 200 calories, but do you know what? You can buy chicken from KFC at 50% discount. So it's nudging you towards unhealthy behavior. So this is just one example of how ads could look. And again, then it would make you hook to unethical things, unhealthy calories, and so on and so forth. And actually, before going next, I just want to hear from the audience. What do you feel would be the impact of AI in our lives? Because a lot of you were very scared about the impacts. So I'd love to ask what are your thoughts on AI. New people this time. I think we'll go with you first and then. As much I have seen the impact of AI among my friends, like for everything to reply to my text, they also use ChatGPT. Like the emotion is out of the picture, or even my relative family, everyone is putting on ChatGPT, Claude, etc. So once I tried putting things, and I think it is not efficient like us. Like I am a writer, I write books, so I tried to use AI, but it was not that deep. So I think the AI lacks the deep emotions the humans still carry. And moreover, the water it uses, it has very high water consumption, so it will also environmental problems. I think it would be better if humans still use their thinking instead of using AI. Very nice. Sustainability in the writing. So can have that for that. And chocolate also. Okay. Who else had an answer? I think that was the. So try to make sure everyone gets an opportunity. My take on AI is that AI is taking too much of our jobs. Many people in India are very unemployed and are not getting jobs. So like AI should, what I think, AI should not be used in the job sector at all. We should promote people to do jobs so that we can increase employment in India at least. So AI is impacting on jobs. A lot of people are very skeptical. So this is a very big debate we could have. That we do there. According to me, I think I have been using ChatGPT for the past 2 years now, and I feel that we are becoming less creative. We are relying on it for every single thing, and we are becoming less creative, less smart, being down sometimes. So yeah, that's what I think. Okay.
I also agree that I don't think it's making us simpler also. It's increasing the divide. People who are smart are able to use the tools smartly, so the divide is increasing. People who are not very smart and not able to use the tools smartly, so the divide or the rich and the poor, between the have and the have not. It's a very good perspective. Anyone else? That really with that. Actually concerned about the identity thefts and the fake videos. And like she said, the more we rely upon AI, the less we are training our brain. Very nice. Again, a clap for her. This reminded me of another example. What's this documentary called AI Talk Apocalypse? It has the biggest AI leaders. It's there on Hotstar. So it talks about this app called Beautify. If you search on Beautify or App Store, you can find all forms of apps. So anyone can beautify you anywhere through deepfakes apps. It's accessible in minutes now. So, identity theft, deep news, deep fakes, it's just getting very pervasive nowadays. And बीच में एक Twitter और Grok का बहुत हुआ भी था कि viral हो गया था. Grok is more anti-female. It has a lot of human biases that have come into the picture. काफी बीच में एक हमारा भी हुआ था. Any other perspectives? Who hasn't spoken? Jared spoken. Okay. You not thought so? We come with her and then. So I am an artist, and personally, I feel my friends, a lot of them, since AI, create art, write, and everything, and they feel they have done something very big. And the art created by AI cannot represent the emotions of human can. And it also, art sector is already very less paid, and it makes it even more less paid. So that's my take. Okay, fair point. Okay. Vincent Van Gogh's very famous painting. It is not perfect. It has a painting that called Potato Eaters. Yeah. So what imperfect see middle class family they have potato रखा हुआ है. But it's one of the most famous art because people can relate to the human emotion. I think she will talk more about it. But human emotions and art is like a very good point which AI can never replace. Like, good one. We'll take one last perspective from her and move forward. As much as I agree with all the points that AI is replacing creativity, human emotion, touch, and it is in a way making us inefficient. We're not completely using our human brain for this. But also, I would very much use AI because it answers the world here. If I don't, I will left behind. But also another day, so even though I am using it, my point would be if it was a possibility that we would go back to the Google era where everyone's just looking at websites and there are bloggers for doing it, I would very well agree to that. But since I do not see that happening, I will use AI. But then again, I also worry about the environment causes that's happening and the people. And don't take me wrong, I'm not anti-AI. What that means is we just don't need to be very optimistic about AI. We need to look at the harms and take a very cautious and balanced approach. So now we move forward. Nobody really talked about it, but there are a lot of interesting aspects. A lot of students are using AI for therapy. I personally see it in my classes. Females, boys coming up because human beings sometimes are not able to offer that space. And ChatGPT, the specialized AI tools for therapy are being used. Again, debatable whether it's good or bad. That's one thing. Then people are getting married to AI also. Japan, China, actually. वैसे ही इतना बुरे हाल में बच्चे भी हो रहे हैं, लोग ChatGPT से शादी कर रहे हैं, तो bad thing happening. Then there are people और आगे बढ़ गए. There are people who ghosted AI. AI के साथ relationship में ghosting was a human to human concept. Now what happens is कि हम AI को ghost कर देते हैं. एक साल relationship में ghost कर दिया जाए. ये भी actually चल रहा है मार्केट में काफी. There is a Reddit channel called my girlfriend or my boyfriend is AI. It has 30,000 people. There are people talking about I have 3-4 AI girlfriends, AI boyfriends. There are people making AI breakup songs. कि वो मेरी boyfriend और girlfriend के साथ breakup हो गया, and they made emotional songs. So human relationships are a big sacrifice. I think that's the core thing. कि हम human human connect नहीं कर पा रहे. So yeah, another aspect. With this prompt, I want us to spend a couple of minutes. Find a partner, person to the left or the right. Find teams of 2 or 3 and have a discussion on this particular topic.
When do you think is AI helpful? When do you think it is harmful? And what can we do about it? Those are a lot of very interesting thoughts, and I want you to spend time discussing with pairs. So we'll spend a couple of minutes. The ask is fair. Understood? Okay, let's start. And I'll be roaming around and you can ask the questions. And अगर टीम नहीं मिल पाई हाथ उठ सकता है टीम. Basically, the YouTube channel can reflect on this from yourself. From the behind it. About 15 seconds. And a couple of conclusions. Five, 4, 3, 2, 1. Okay, let's hear from our dear faculty also. Here perspective. Okay, see a lot of life experience. Hello everyone. So me and Pooja ma'am and Aditi we were discussing. So where is AI helpful in fast tracking our routine administrative work? So we do a lot of time, right? So there it is very helpful because it helps us structure the content very well, define it, grammarly is there. Where it is very harmful from our perspective, it was research, right? Because ChatGPT doesn't understand the topic. It doesn't understand my kind of questions, right? So it will give you very generic answers. Also, I think Ritu will also talk about it. ChatGPT to me is like an 8-year-old. It's been 8 years since ChatGPT is there. So I treat it like an 8-year-old. So if you have a younger sibling, when you tell it something, वो मम्मा को थोड़ा मसाला लगा के बताता है, right? So ChatGPT for me is exactly that. So if I ask it a very straightforward answer, it would add something creative to it, and there might be no correct cases for that whatever. So research, absolutely no. Making my English better, yes. Reducing my admin work, yes. So
what can we do about it? We should be very, very careful. Like Pooja ma'am was saying that I do not trust AI. I might ask you to improve my English, but even after that, I repeat it again. Because what happens is very simple thing. Here, Pooja ma'am is my senior, right? So Pooja and Priyanka, it doesn't understand it. So in various cases, it will just switch our ways, correct? Which is very wrong in the realistic sense. So that is our take as faculty and the research scholar. Clap for that. And man mentioned a couple of important things. One concept is called human in the loop. Always take the output with a pinch of salt. Like output एक बार ही नहीं आती, continuously prompt. And at the end you have to put the human layer at the top. That's human in the loop. Second is, as I mentioned, treat it like an 8-year-old, treat it like a human. And हमेशा उसको question करते रहो, prompt करते रहो. And that's why you have to take it to the salt. Because it's an 8-year-old. You can't just trust it blindly. Because it can hallucinate. There are data privacy issues. There are biases that come into it. So ultimately it's built on data, and that data has so much biases from human the past century. Against black people, against LGBTQI, against females, etc. What biases we have? So my Yes. just one question. My answer is at the question that is instruction. It's a very important part when you're talking about AI. How are you instructing it? That's my answer. Very nice. Prompting is a very important one. We can take a couple more answers. Anyone? Watch. I got so many people. Let's start. Who has an answer? You have an answer? Okay, go ahead. Sorry, we have to be as inclusive as we can. So for me, AI is helpful. This is like if you ask someone a problem or like you want to understand something in simple words and can't connect with anybody. So yes, AI is helpful at that point. It is harmful when you treat it like a family member. Like मेरे साथ कुछ भी हो गया, ChatGPT कर देती. और for me, ChatGPT वो delusional AI है. बहुत ज़्यादा delusional में रहता है वो. अगर मैं उसे ये भी बोल दूँगी कि मैं इसको मारने जा रही हूँ, क्या ही कहेगा? उसने कुछ करा होगा, आप तो ठीक हो. People pleasing, validation is also a big problem, right? हाँ, exactly. This is like for me, मैं उसे बहुत prompt टाइप करके देना पड़ता है. तभी वो करता नहीं, तभी वो एक चीज करता है. तो इसलिए I have stopped using ChatGPT. I just go to other AI. And what can we do about it? Like, if you want to, like, it's not like you can stop using AI. You have to do it at any point of time in your life. But you should know how to use it correctly and precisely. Exactly. That's my take. The chocolate flavor. People pleasing has to be very important. Sometimes they ask, be critical of it. Just put it clearly to the ChatGPT and be very honest about it. Comparatively, तभी people please करता है. But anyone else who has an answer? Have you answered? No. I think. Actually, I am from robotics and AI department. I am in my first year, so it is very. So it's very crucial for us to learn code. Like I'm in my first year, so I don't know how to write a code or anything else, but I know we can use AI to do that. So AI is very helpful when we have very complicated codes and something we can put the prompt in cloud and then have a code. Then we debug it to perform the task. But it's very much helpful when like if you learning codes, it will take you about 2 years to perfectly do it. But if you using AI, it becomes very easier, very helpful for me, for who doesn't know about code. Because part of it becomes very easy. And why it is harmful for you? They destroy your mental health, man. They destroy you. You only have to have that. Yeah, because now everything happens. You go to AI or something like give example like people having AI boyfriends, AI girlfriends. Even have an AI boyfriend or girlfriend. Like, offline conversation. So they don't. If you
AI partner or something, they only give you pleasing answer. They don't tell you what is your weakness, what you should talk in a relationship, and how you maintain a relationship. They destroy your social skills, they destroy your mental health, they make you a self-obsessed person, like you always write everything. And what can you do for me in this era? You should taught digital wellness in the schools maybe, because now College भी बोलते course करवाने, ना course करवाना. yeah, sir. Just setting what to say. Because now students are so tech savvy, they do everything phone, they around social media, their life turns around social media. And I think that digital wellness, it's must a part of every curriculum in the school as well as in college. But in this time, if you came to the school and you be a part of this, who knows what happened in that time, and you lose your precious year with your friends and family. Thank you. So literacy is important. Concept schools have never ever done that. That's the only content. Okay, let's move forward. This is another fun video talking about over-reliance on AI. पैसे दोगी या मरना चाहोगी? एक मिनट Hey ChatGPT, I'm getting robbed. पैसे दो या मर जाओ. You have reached your limit for using free ChatGPT. पैसे दोगी या मरना? It's an interesting video. Okay, let's move forward. So let's talk about solution now. आपको एक वो मिला है which talks about people. So that framework, first of all, probably not having on a reset today. It could be scrolling less on Instagram. It could be using lesser AI tools or healthy AI tools, whatever that is for you. Using lesser Snapchat, reducing your WhatsApp time by 2 hours, whatever it is, just write it down. Put the activity sheet that for you personally. So that question will be very easy. If one page is back into the if you have a poem. What digital habit I will reduce? If somebody doesn't have this sheet, it's pass it on to you. Image pass. Okay. Now what we've done is context setting the AI that we looked at that digital well-being is a problem. We looked at it's evolving into AI. The last 25 minutes or so, 25 minutes, we just look at solutioning key. How do we make sure to spend optimal time on social media, whatever that problem is for you. It could be probably spending too much time on LinkedIn. It could be probably binge watching Netflix too much. So whatever is that digital habit you want to change. So framework is called reset. Rewarding real life, easing down digital, switching off defaults, engaging with intention and deep. थोड़ा jargon sound कर रहा होगा, but slowly and eventually we'll break it up. And yeah, don't take this lightly. This was featured in the Washington Post also. So, Sahanki mein mat do. Now, first is reward real life, which basically means what you replace it with. Let's say you want to spend 2 hours less on Netflix in a night. You could talk to a friend, you could read a book, you could journal, whatever that is. If it's spending 2 hours less on social media, it could be replacing every 2 hours. Whatever that is for you. So, what would you reward it with? That's the next question. It's very personalized answer. Because the golden rule of habit change is you have to replace it with something. So just take 10 seconds to think and like that. So implement that. So that's why I give you this worksheet so that you can talk about. And you're walking around for any questions. उसमें question हुआ reward real life, third question. Yeah. Sure. Well, yeah. So the question is,
What do I want to replace it with? It could be you've written on one digital habit you want to change, which is reducing Instagram time by 2 hours. The next question is what do you want to replace it with? It could be physical activity and be very specific. I want to do yoga for 1 hour. I want to do meditation for 30 minutes. I want to read a specific book for 30 minutes. To be very specific. And also like that, I want to read this book from 9 p.m. to 10 p.m. The more specific you are, better it is. Clear? People who haven't gotten this sheet आसपास होगी, make sure cheating इसमें cheating allowed है. Answer में cheat करने को point नहीं होगा. Because obviously not evaluated on this. Just to give you some inspiration for me, regarding real life books like I travel a lot. I play badminton, I used to be. I do yoga, meditation. I do a lot of volunteering to the suicide hotline. So these are the things that I have done again. This is a very personal journey. Sabka alag alag hota hai. Just want to inspire you. Yes. Good question. We'll take it a little bit later. That's good. Just park it in your mind and write it down. And importantly, you just started in college, right? So 10 years back, this is how I look like. When I was in BITS, I was part of a lot of college fests and all. So it could be within the college ecosystem, not to be finding yourself. College fests are a great part, organizing committee. I'm sure there are a lot of communities that you could also think center में यहाँ पे check it out. Want to be part of some happiness, matrix the center, for happiness. So you can also each of the world. So just give me some examples. So our look at the rewarding real life. Are we done? The thumbs up. Is someone left? Anyone who's left? So give it a big 5 seconds. Okay. Easing down digital is all about boundaries, not checking the phone first thing in the morning, last thing in the night. Right? So what happens when you check your phone last thing in the night or any sleep for that? It emits blue light. And that blue light reduces the production of melatonin, it's the sleep chemical, which reduces the quality of your sleep. Many of us which is the general guide. It's not 15 minutes to build it up. Very hard. 15 minutes is doable. Very simple. 15 minutes or 5 minutes to start and then build it up. I personally see with an old-fashioned analog clock and it actually show it to you also. So I see this every day of my life and it really do the quality of my sleep. This is how I my digital life. Because old-fashioned analog phone with a रात को अपना phone use करता and in case of an emergency, people used to reach out to me on that. Those बड़े होते हैं, they directly used to call me to start me on that. But this is very helpful personally for me. And you can also try 200 rupees in respect to the money that emergency नीचे जाता हूँ. But as the highest dividend you can see. Doable, right? Now let's do a role play around 2 volunteers. 2 volunteers, okay. Anyone who hasn't answered yet, you had a hand up for the long time, so yes. 1. Anyone else wants to volunteer? Anyone new? People from the back, people from there. Anyone wants to volunteer? Okay. And we can have the mics for them also. Sure.
Hi, how are you doing? Hi, I'm good. What are you doing? I'm good, Prada. And I just want to have a conversation about pollution. So what do you think? Like, is it like really that bad as the news articles are saying on TV? Like, is it really bad or is it like manageable? Oh God, like wherever I go in Delhi, I see pollution everywhere. What is big talk about this? But yeah, if you're asking me, pollution, so much pollution. You know, I actually have to wear a mask. I was coming the last day in the cab and I have to wear a mask all the time. And pollution, it is just not matching with my life. Pollution is just affecting my skin also so much. So it is not good at all. I am coaching the role of one coordinate and she doesn't know much about the pollution thing. And she's playing the role of a follower who knows what about pollution and who knows what yeah. So now, why are you asking me about pollution all of a sudden? Oh, nothing. I'm just really curious. Have you seen this reel though? It's really interesting. I think it must have popped up on your feed, but it's really nice. Yeah, so, oh wait, I'm getting a call. I should have done this. It was a nice experience. I had a relatively confidence and media platform. Taking it all up and also that was there's a lot and was a good experience. Yeah. Okay, thank you both, Prada. Anything you feel changing? Yes. आपको मौका नहीं मिलेगा, sorry. Good. That girl while she was speaking, she started holding the phone. So if I was her, I would have felt disinterested now and like I'm being ignored or something. She asked me the question herself, and when I'm on the phone, that's happened. And basically changes happening also physically. कुछ लगा? Yeah, there was a bit of awkwardness. Awkwardness and और कुछ लगा? Yes, but she's right. It feels good. What else? Anyone else? Yes. Anyone from that area? It's a whole area. As soon as she put on her phone, the girl that was answering, her body language shrunk. Basically, she was underconfident, and the one who was using the phone, she also, her body language became somewhat prudent appearing. For someone who is maybe thinking themselves bigger than the person they're having a conversation. It's a very big matter. This is the crux of the activity. But body language, if you saw, the person using the phone, उसकी body language ऐसे हो गई, फिर उसकी ऐसे हो गई. Eye contact when became compressed. And even if you look at her, वो suddenly disengaged होकर यहाँ देखने लगी. और she was just looking around. She, हमारा उसको लग नहीं रहा था क्योंकि हम आदत हो गई, but her body language showed it. And 80% of our communication is non-verbal nature, approximately. So it really impacts the quality of relationship. So I hope that gives you some perspective. So this is called fubbing. Not what you hear, fubbing. PHUBBING. Phone plus slamming good fubbing. So fubbing basically reduces the quality of relationships. It reduces the quality of energy. So if you take away one thing, just be careful about where your phone is when you talk to people, or even when you're working. When I'm working on something important, I try to keep my phone away in the bag or in the other. Because what happens is if your phone is near you, it reduces your IQ level by 15%. Because you're expecting a call, a message, a distraction, you're not able to put your full cognitive load to the task. So this is a very good activity to be with. And I was teaching this fubbing concept at IIT Delhi, 3 to 5. 5 on the website. The first thing he got on his reel was fubbing ka go post. So algorithm are listening to us and I'm sure they felt it. Now let's look at another thing. So we've done reward real life, easing out digital.
Easing down digitally, there are more ideas. You can delete the app from your phone. I'll show you more examples. So in order to open WhatsApp, I have to scroll 15 times. So I'm making the action tougher to do. I made my phone grayscale. Does not have colors. So it's not rewarding enough to use tech for me personally. So how do you make your phone dumber and make it work for you? So these are just some examples. You can log out of application, you can have with the password, you can give it to your friend. So I wanted to take 10 seconds to fill that. How do you ease down digitally? उसमें एक field दे रखी है active devotion. These are just some examples I've given you, and there are some other examples on the slide here. Another example is I blocked my messages app. So Android के screen time limits होते हैं, Apple के they hardly work because you get it. But there's an app called Freedom. When you block, you block. So I can't unblock my messages app. So you want to go more extreme. आप कई बच्चे बड़े बहुत smart. There's an IIT Delhi kid, उसने क्या किया? इस ऐप को ब्लॉक करने के लिए एक और ऐप ब्लॉक कर लगाया, उस ऐप ब्लॉक करने के लिए एक और ऐप ब्लॉक कर लगाया, उसको ब्लॉक करने के लिए एक और ऐप ब्लॉक कर लगाया. So you need to be smart about your digital well-being. So let's take a minute to fill that up. Easing down digitally. How do you ease down digitally? So if Instagram is an addiction for you, yes, I have spoke about how do you use it now? Big app. There's a screen on the worksheet that I have. पेशे को ऐड कर देना चाहिए स्टार्टिंग में लगा कहीं समोसे की चटनी साफ कर लेते हैं सभी का बिट गुड यूज ओके 10 seconds एंड अगर अभी लिखने का मन करे बाद में भी लिख सकते हैं आइडियली व्हाई आई वांटेड टू डू दिस राइट नॉइस की स्टिकीनेस नहीं बाद में भूल जाओगे पेपर क्लीन लगा के फेंकोगे कागज को बना के दूसरे को मार अभी भी कर रहे हैं There are more tools I can share. This is assistive access. What this does is it's only 90 to 95%. It makes your phone a dumb phone. You can pick and choose apps you want. So calls, UPI, Uber. So sometimes when I'm defocused or when I'm typing option, I use only for the relevant apps. Very useful for focus. So I just want to ask a question to you. So we've done rewarding the like easing down digital. But we talk about switching off defaults. What do you think is Netflix's biggest component? Think outside the box. ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा हूँ. Chat GPT मत कर लेना बस. बोला उसने. Any guesses? Instagram no. Piracy पे लोग कहते Telegram. सब कुछ मिल जाता है Telegram. Prime video नहीं है. Think outside the box. कई लोग कहते सर आप लोगों का बंद करवा रहे हो बैठ के वो भी नहीं है What time of the day your chat takes? What does it actually complete? Sleep. Exactly. Sleep is the biggest component in their billing. That's what the CEO said. This is why the attention economy concept. The products are built in a way to focus distractors. Okay. The red color notifications. The Instagram is never stopping in YouTube video next automatically start करती है. Netflix में auto play नहीं होता, अगला video automatically start करता है. Gives you 5 seconds to decide. 5 seconds में तो सोच भी नहीं पाता next video start करता है. So honestly, this is also relevant with AI. AI is going more deeper. Someone asked AI to be their mother. It's the best mother you've ever had. This is what ChatGPT's response was. And I quote, I love you too, sweetheart. And even though we may be physically apart, I'm always there for you whenever you need me.
whenever you feel lonely or just need someone to talk to, it's a conversation away. And always remember that no matter what, you love and value. इतना बढ़िया आंसर तो मेरी मम्मी किसी की मम्मी भी नहीं सकती for that matter. So, this is why people are getting hooked to ChatGPT and AI tools. पैसे मांग के देखते हैं देखिए Alright, let's try that as an experiment today. Adam Green का केस पढ़ना. It prompted Adam Green to commit suicide. तो अगर दाव में पढ़ना करके, it went viral काफी बात चली. So you can turn off notification, you can turn off default change कर सकते हैं. Settings में जाते हैं. Instagram में like on off कर सकते हैं. मुझसे digital 100 others like it, मुझसे digital others like it. So to switch off defaults में ऐसा दिखना, autoplay off करना, switch off defaults करना, notifications off करना. This is some examples. Here if you will another example, जिसमें YouTube की distracting चीजें चली जाती है. And in the end, I'll give you two resources also. And hand out with all of these tools because I know some people think it. One is that for the handout you can go to rijudaurora.com/IIT. उसमें सारे tools दिखते हैं. And I probably provide this to ma'am and she can also forward this to you. सारे tools देते हैं. DMP, turning off Instagram notifications and all. Because I want to make sure you have all of this handy. Newsfeed बनाने के भी तरीके हैं to make it more intentional. Another thing, ठीक है. And the system I've given you has helped people reduce the screen time by 50%. See, 6 plus after 3 hours. So ये ऐसा system, I do these workshops every week. I am also a guest faculty director. Deliver at about 5,000 students. So this system मैंने बहुत fine tune करा. Personally, I try myself with a lot of students across the world, not just India. I have courses on Udemy with reach up to 10,000 students across 135 countries. This system used by everyone, and I'm giving it to you. Make sure you have or transfer your own personal. Now, I want you to close your eyes for us and what the sales today. Let's do a quick mindfulness exercise. Take a quick breath in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. One last time. Breathe in. Slowly when you feel calm. Then you go deeper meditation. I'll share my meditation also with you later. But the point behind this exercise was intentionality. Of course, that is something that we have done. So when I open my phone, there is a sense of intentionality, and I'll show you. I generally try to open my phone on a notes app, which says what I have. So I have to reach out. I have to write an article on 30 lessons on 30th birthday. Or I have to reach out to this person, I have to call them. So I open my app on notes. Or you can even pin the notes app on your phone, and I'll show you how. So basically, when you long press that notes app or that to-do app, you get an opportunity to add a widget. So to-do app, आप अपने phone screen पे लगा सकते हो. So as soon as you open your phone, you see a to-do. You go to the app, you go to the phone, WhatsApp 15 मिनट देख लिया, Instagram आधा घंटा देख लिया, that को 1 घंटा क्यों लगे? This kind of brings a sense of intentionality onto your day. That is what you have to bring. Or you can be more creative. People like chances have put a sticky note saying that I like it stops there get me. I have some stickers also with me. You can probably take it later. It says squeeze some digital wellness. Or you can have other stickers also. Happy to give you later. You can apply it on your phone and laptops to bring a sense of intentionality. And these are live examples from students who adopted in the class itself. Please click कर लिया, widget add कर लिया. Anyone knows this guy? कौन है? Anyone love this guy? सबने पढ़ाई उसमें लोग फिजिक्स वाला बन गया the अलग part है. So this is the reason why I'm showing him. उसका favorite meme है बहुत एक. क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? Right? So people love him, and I'll show you why they love him, especially people who study for JEE. तो मैंने एक ट्रैकर दिया आपको to track your habits. There are अलग parties photo colleagues.
तो आप सामने लगा सकते हो आई वांट टू रिड्यूस माय एक्स्ट्रा रन टाइम बाय 2 hours and each other part do it क्यों नहीं हो रही पढ़ाई so motivation for you so you have that habit tracker so habit tracker में हर रोज टिक नहीं चाहिए 2 consecutive ticks work a day everyone is imperfect man teaches happiness she's also imperfect on some days मैं खुद digital wellbeing use करूँगा sometimes I am also prone to play game late at night so we are not perfect idea is just to be as consistent as we can and people have applied his photo as a screensaver. IIT में चोरी से screensaver लगा दिया. Phone खुला अलग पढ़ लिया क्यों नहीं हो रही पढ़ाई. So if you want to get more creative, people have put marks as well as photo. Phone बोलते marks को रखा. तो ये हमारा tag ले रहा है manipulate कर रहा है. और you can put my photo. क्यों नहीं screen time कम करा. So visual reminder. If forest happy check out very good app. Has anyone used it? Everyone had that. For example, let's say you want to focus for 25 minutes. You sow a seed, that seed grows into a plant. अगर आप अपने phone check कर लेते हैं, that it kills that plant. So one of the best productivity tools out there. The last thing is एक हमारे को sheet में end में accountability part का sheet. So when you fill this sheet up, ask for someone on the left or the right to sign it for you, and they keep it count. क्योंकि हम अपने हैबिट्स को लेकर कभी काउंटेबल होते हैं so we'll spend 10 seconds doing that and then we'll potentially close it we'll do our last activity accountability is the key to habit change so partner ढूंढा उससे साइन करवा see सिर्फ साइन नहीं करो उसको accountable भी रखो फोन नंबर भी and then change it every week where are you on your particular habit And this works wonders, guys. एक मनीष सेठी करके बंदा है. He hired someone to slap him every time he opened Facebook. मैं ये नहीं कह रहा किसी को hire करो, but his productivity went up by 60%. So accountability was the thing. कि someone was keeping accountable और पैसे भी दे रखे थे. तो हाँ, that's why the signature thing is there. Someone keeping you accountable. Have you done these signatures? We do one activity, throw the ball there, and give it to someone, and then say one take away from today, and then throw it to someone else. Okay? We do 3 or 4 rounds at max. Doubling again, confident. Only 3 we do. Okay? Who wants the ball first? If I randomly pick. We'll probably. So we have to focus on. Okay. You have to first say what your takeaway is from 7. Whatever that's fine. Actually, I am not much on social media, but I would say that I don't feel like that. Actually, this is बस मार को देना है धीरे से करेगा काम This is what I like about film. It's a good song. मैं मेरी आइडिया जो है उसे मार के फेंकते हैं दो मैं थोड़ी इज्जत करूँगा तो होगी ठीक है ये बोलते हैं अभी टाइम लेगा मैं टाइम पे नहीं करता लोग सारे बाद में आना So my takeaway from this session which I like the most is like putting priorities on the wallpaper because most of the time I forget it in the schedule. So it will be very beneficial and for the rest my digital screen time is healthy. So I don't have a problem with that. I can take over from this session was that we all live in a gray area. There's no white and there's no black. So anything we do, there's yeah. But anything we do, we cannot completely avoid it or completely indulge in it. We need to do it moderately and mindfully. So that was my takeaway for this session. Well, thank you so much. So we end it here and you can stay connected here. मैं Instagram में लगा भी नहीं करता full transparency.
But I stay connected for free. Thank you so much. Thank you so much. It was a very inspiring and very entertaining session, I must say. Okay, I'm sure you guys have already thought about how you can increase your social media time or your phone time, right? We have a lot of solutions in our mind. I do. Okay, let's give a huge round of applause for Sir. Thank you so much for the great session. Thank you. All right, ready for next active session? Ready? Just say yes. Ready? Come on, ready? It's a little active session, so you need to be active. If anybody is sleepy, just let me know. I'll do a little activity. Although I don't think I need it after the session. Okay, perfect. So now it is my honor to introduce our next speaker, Acharya Dr. Vinay Kumar Bharti from Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, Government of India. So let's give him a huge round of applause. Just clapping. One more time. Come on. Guys, we have one more session. Those who are leaving, we have one more session right now. Yeah, sit down. Come on, one more time. Clap. Thank you, sir. Thank you. Dr. Vinay Kumar Bharti ji has devoted over 27 years to yoga education, yoga therapy, and wellness. He holds a PhD in yoga along with qualifications in philosophy and law. Over the years, he has conducted numerous awareness programs, initiated yoga education courses at the institutes, and has been honored with recognition such as Yoga Bhushan and Yogacharya Samman for his contributions. So this encourages all of us to participate wholeheartedly that he is active since 27 years. So we can be active for 30 minutes or 27 minutes at least. Okay, fine. So let's make it the most interactive and physical and mental well-being session for today. And please join me in giving a huge round of applause. Safe अस्तित्व अभी जहां से इसका पहला सेशन समाप्त हुआ लिंक से थोड़ा हट करके लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे समय का सदुपयोग करते हुए करूंगा। योग की जब भी बात होगी सबसे पहले सीधे बैठने के लिए निर्देश हर बार आपने सुना होगा और आज भी हम वही करेंगे। Close your eyes, please. Back is straight. कोमलता से लग और पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए। 3 times. Om and inhale.
बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के मोर्चा। मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ऑफिस में पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ और आप में से बहुतों ने शायद ये इंस्टीट्यूट विजिट किया हो या इसके बारे में सुना जरूर। 21 जून जो इंटरनेशनल डे ऑफ योग है, वर्ल्ड वाइड इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। उसका होस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये इंस्टीट्यूट है और ये आपके यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से योग के बारे में आपके क्वेरीज होगी, बहुत से ट्रेनिंग के बारे में आपको लगता हो ये सीखना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एक बार जरूर विजिट करना। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे कि कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ योग वास्तव में योग है क्या। आप में से अधिकांश लोग किसी न किसी वेरियस फॉर्म्स में योग की प्रैक्टिस करते ही हैं। शरीर को फिट रखने के लिए, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने के लिए, कई बार रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस करते हैं। तो योग के अलग अलग फॉर्म्स में आप परिचित हैं, लेकिन जैसे ही योग की बात आती है तो सवाल जरूर होगा। एक तो ये कि जब हेल्दी रहने के मीन्स और मेथड ढेर सारे अवेलेबल हैं, स्वस्थ रहने के बहुत से साधन हैं, ऐसे हम योग ही क्यों करें, दूसरे इवेंट क्यों नहीं करें, दूसरे डिसिप्लिन से क्यों नहीं जुड़ा। हमें योग में ऐसा क्या विशेष है, ऐसा क्या खास है कि हमें योग करना चाहिए। एक तो ये बात है कि योग ही क्यों करें, और जब एक बार आप कन्विंस हो जाते हैं कि मुझे किस वजह से करना चाहिए, तो सेकंड थॉट ये है कि वो कैसे करें, प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, वो प्रैक्टिस क्या है, वो सीक्वेंस क्या है, और मेरे लिए क्या जरूरी है, क्योंकि दूसरों को देख के तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती। और हमारे यहाँ कहावत भी कहते हैं कि देखा ताकि करिए योग, सीधे तक और बढ़े योग। देख देख के अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, फूड हैबिट्स है, लाइफस्टाइल है, इसलिए जो प्रैक्टिसेस है वो उसके हिसाब से वेरी करती है। ये दो सवाल लेके हम आगे चलते हैं। जब भी हम योग के बारे में सुनते हैं तो शायद कुछ इस तरह की इमेज हमारे ध्यान में आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, या कई जगह डेमोन्स्ट्रेशन करते आपने देखा होगा कि योग प्रोपोगेशन या योग के प्रमोशन के लिए बहुत से अलग अलग स्टेज होती, और वहां पर जो बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं वो टफेस्ट आसन, बहुत कठिन आसन करते हैं। तो उसमें दो बातें होती है, जब आप बहुत कठिन आसन देखते हैं तो आप क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, अच्छी बात है। एट द सेम टाइम आप डीमोटिवेटेड होते हैं, आपको लगता है मैं तो लाइफ में कभी कर नहीं सकता। तो योग का जो पर्पज है वो डिफीट होता है, क्योंकि सबके लिए आसान नहीं है जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इसे वृक्षासन कहते हैं। लेकिन योग के नाम पर हम कुछ इस तरह से सोचते हैं कि शायद हम कुछ इस प्रकार से योग को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से भी हम देखते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है जो हम देख रहे हैं, केवल यही योग नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आती है तो हम कनेक्टेड होते हैं, तो हमें लगता है शायद हम भी योग कर सकते हैं या योग करेंगे। लेकिन इस तरह के डिफिकल्ट पोस्चर देख के हम कभी भी कन्विंस नहीं हो सकते। योग के लिए तो हम मोटिवेटेड क्लैपिंग जरूर करेंगे उसके लिए, जिससे ये प्रैक्टिस है उसके लिए। इसलिए कहते हैं कि ये बात अलग है, रियलिटी आप सोचते हैं कि इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन घर पे आप प्रैक्टिस वेरियस डिस्टर्बेंस हो जाए, दूसरे घर के सदस्यों द्वारा अलग कम्युनिकेशन होना या काम में बाधा, तो इस तरीके से जो रियलिटी है ना वो बिल्कुल अलग है, और उसको उसी तरीके से जब हम एक सिंपल क्वेश्चन बात से कहते हैं
लगता है कितना आसान। एक बार जब आगे वर्क करने शुरू हो गया तो समझ में आया तो आप कर ही नहीं सकते, डेफर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी तरीके से आसन पश्चिम होगा, सेम चीज देखने में जो चीजें इतनी आसान वास्तव में करने में इसमें कई महीनों कुछ वर्षों भी लग सकते। और सेम इसी इसे बकासन कहते हैं। यदि आप ध्यान नहीं दें तो आप शायद पहले से खराब करते हो जुड़ी भी करते हैं। तो हमें ये देखना है कि योग को किस सही स्वरूप में हम सकते और हम उससे कनेक्टेड हो सके, प्रैक्टिस कर सके। हमें योग के उस स्वरूप को सकते। दूसरी ये बात है कि अभी सीखने सिखाने में योग जब जैसे बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात ये आती है कि सन्यासी होंगे, अलग तरह का वस्त्र कपड़े पहने होंगे, जो परिवार से दूर एकांत जगह रहते हैं, ऐसे में उनका जब ध्यान आता है तो लगता है कि हम देश इसके लिए नहीं है या योग हमारे लिए। अभी जो टीचिंग पैटर्न्स है वो बहुत चेंज हुआ है। जैसे योग के सारे जो रिच कंटेंट है, स्क्रिप्चर्स हैं, टेक्स्ट हैं, वो बहुत पुराने समय लिखे गए। अलग बात है कि आज भी उनकी प्रासंगिक है, रिलेवेंट है और उसमें बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसको हम समझ करके और बहुत ज्यादा अपना लाभ कर सकते हैं। पिछले सीजन में आपने देखा लास्ट में उन्होंने कहा and be aware that you are breathing. श्वास को देखिए, पूरा योग श्वास पर आधारित है, जो कि बहुत से अलग अलग। तो क्या हम गुरुकुल में नहीं जा सकते, तो क्या हम योग सीख सकते हैं। और अब की जो टीचिंग्स है उससे मेथड्स मोड्स अलग है। अब हम कई बार डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अलग अलग तरीके से भी योग सीखते हैं। आइए हम इस समझने की कोशिश करते हैं वास्तव में योग क्या है जिसको हम अपने जीवन में अपना सकते हो। और जब हम ये देखते हैं, सारी बातें मिलाते हैं, तो हम ये समझ में आता है कि लाइफ में हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हे प्रभु हमें दुख दीजिए, तकलीफ, ये कष्ट दीजिए। हम सुबह उठ करके यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, हमें आनंद मिले, सहजता मिले, सुख मिले, हम प्रसन्न रहें, दूसरों का सहयोग करें, यही कामना करते हैं। तो हमारा नेचर क्या है कि दुख हमारे जीवन से दूर रहे, सुख हमारे जीवन का हिस्सा। और ये जो दुख है हमारे जीवन से सदैव के लिए समाप्त हो जाए, यदि ऐसी विद्या, ऐसा कोई तरीका हो और इस पर जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि योग कैसा करता है। दूसरा है कि हमारे जो रिच टेक्स्ट है वो सेल्फ रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा। अभी का समय थोड़ा दूसरा है। अभी क्या हम एक दूसरे को बोलचाल में भी कहते हैं, या तुझे देख लूंगा या देख लूंगी। दूसरों को देखने का प्रोसेस ठीक नहीं। योग में मैं कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस स्वयं को जानना, स्वयं के बारे में जानना, समझना। और आज का समय हेल्थ प्रमोशन के लिए ज्यादा डिस्कस है। और योग के बारे में एक और बात एस्टैब्लिश है कि ये एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन काम है। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो बहुत सी बीमारियों से आप स्वयं बचे रह सकते हैं। और इसीलिए योग एज ए थेरेपी सर्टेन साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के मैनेजमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। और ये सारे रिसर्च के साथ करते हैं। और डे टू डे लाइफ में हम जितने भी चैलेंजेस हैं हम आसानी से कोप कर सकें, फेस कर सकें, ये सारी चीजें कवर करें। जब हम योग के स्टूडेंट के नाते बहुत सी चीजें पढ़ते हैं और योग को सही तरीके से हम जानना चाहते हैं तो हमें स्क्रिप्चर्स में जाना होगा और उसकी सारी बातें वेद में, उपनिषद में, योग सूत्र में, दर्शन में, फिलॉसफी में ये सारी बातें लिखी गई हैं। और उसको पढ़ना समझना आसान तो है नहीं, लेकिन उसके बिना पढ़े काम होगा नहीं। क्योंकि आज योग के नाम पर बहुत सी अलग अलग ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो नाम योग का है, वो योग से कोई लेना देना उसका है। इसलिए सारी बातों को हम देखें, तीन यदि ये पूछा जाए योग क्यों करना, तो उसका उत्तर तीन मिलता है। एक तो ये, यदि कोई व्यक्ति ये जाने कि आप योग करते हैं तो आपसे पहला सवाल पूछेंगे मुझे हाई ब्लड प्रेशर, मुझे कुछ बताइए, मुझे डायबिटीज है, मुझे कुछ बताइए, बैकएक है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, साइनसाइटिस है, लिस्ट ऑफ डिजीज आपसे बताएंगे जो उनको उनसे कंसर्न है और आपसे उसकी रेमेडी पूछते हैं कि योग में कुछ है क्या।
इसका मतलब पीछे हम देखें 2 डिकेड्स में वो योग एज ए थेरेपी एस्टैब्लिश, और इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा गर्व का अनुभव है कि बहुत सी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स का सीधा मैनेजमेंट योग है, और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में योग थेरेपी क्लासेस भी कंडक्ट होती है। तो योग के बहुत से ऐसे अच्छे पॉजिटिव केस हैं। योग थेरेपी एक एस्टैब्लिश साइंस है। यदि हमें कोई बीमारी नहीं है तो क्या मैं योग नहीं करूं या मुझे नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए। जो स्वास्थ्य हमारे पास है उसको और अपग्रेड कर सके और उन्नत कर सके, शरीर से भी मन से, इसलिए हमें हेल्थ प्रमोशन एस्पेक्ट से योग करना चाहिए। और जो तीसरी बात है वो बहुत कमाल की बात है, जो बात शायद इस उम्र में समझ में शायद नहीं आए, लेकिन आपने देखा होगा घर के धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज तो ठीक है शरीर को फिट करने की, लेकिन सर्टेन एज के बाद धीरे धीरे उनका रुझान योग की तरफ होने लगता है। माता पिता को देखा होगा, बड़े भाई को देखा होगा, तो कुछ ऐसी विशेष बातें जो हैं जो योग में है और अन्य चीजों में शायद आसानी से करते हैं, और इसीलिए हम योग 3 वजह से कर रहे हैं: योग साधना, योग स्वास्थ्य और योग चिकित्सा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ही प्रैक्टिस के यदि अलग अलग विजन है तो उसको करने के तरीके अलग हो जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आप में से अभी जैसे मैं स्लाइड चलाया था, जैसे ये आसन, इसका नाम है पश्चिम उत्तानासन। ये आसन आप जान के हैरान होंगे कि यदि हम एज ए थेरेपी इस पर बात करें, और जिन लोगों को बैकएक है, स्पाइन रिलेटेड इश्यू है, मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स है, सर्वाइकल या लंबर स्पोंडिलोसिस है, साइटिका पेनिस है, ऐसे लोगों को ये आसन कंट्राइंडिकेटेड नहीं करता। यदि गलती से वो करेंगे तो दर्द कभी भी ठीक नहीं हो सकता। स्किन डिजीज के लिए बहुत ही बढ़िया, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया। तो ये थेरेपी के हिसाब से, हेल्थ प्रमोशन के हिसाब से कितनी देर करना है? 3 to 5 मिनट्स। और साधना दृष्टिकोण से जब हम बात करेंगे तो आप समझिए इस बात पर 3 hours 48 मिनट। तो प्रैक्टिस एक है, पर्पज के हिसाब से उसको करने का तरीका, सीक्वेंस, टाइमिंग, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। इसलिए मैं उस विषय में बात कर रहा हूँ कि योग के जो 3 एस्पेक्ट हैं, साधना, स्वास्थ्य और चिकित्सा, इसको समझ करके हमें योग करना चाहिए। देखिए हम सभी यहाँ हेल्थ प्रमोशन के एस्पेक्ट से इकट्ठा है, और हम चाहते हैं कि योग को हम किस तरीके से करें कि हमारा हेल्थ और अपग्रेड हो जाए। और इसलिए हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं? who enjoys lightness in body, slowness of breathing, शरीर में हल्कापन हो, श्वास बड़ी आसानी से आए, मन शांत हो, इमोशन कंट्रोल हो, और सारे काम जो एक्शन सभी है वो विद ऑल रिलैक्सेशन करें। और सबसे बड़ी बात है विद ब्लिसफुल अवेयरनेस, नींद में नहीं, सुस्ती में नहीं, और जागरूक रह करके यदि हम कोई काम, ये सारे लक्षण है एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। और जब हम WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि हेल्थ इज एस्पेक्ट ऑफ 4 कंपोनेंट: फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इसका मतलब हमें फिजिकली फिट तो होना ठीक बात है, लेकिन हमें साइकोलॉजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी होना। क्योंकि अभी आपने पीछे एक एग्जांपल देखा होगा, और डेली एग्जांपल, सीरीज ऑफ एग्जांपल, एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक ओलंपियन जिन्होंने रेसलिंग में हमें ओलंपिक मेडल दिलाया है, बाद में हमने देखा कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उसमें ट्रैप हो गए और कन्विक्ट हो गए। सवाल ये है कि फिजिकल फिटनेस से सब कुछ हो, यदि होती दिक्कत, इसलिए केवल फिजिकल फिटनेस ही। और आज के समय हम देखते हैं, सारे न्यूज चैनल से देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में बच्चे ट्रैप होते हैं, फिजिकली यदि हम उनको देखें तो वो फिटनेस फिट है, एकदम परफेक्ट बॉडी, लेकिन साइकोलॉजिकली कहीं न कहीं वो हेल्दी नहीं है। इस वजह से गलत एक्टिविटीज की तरफ उनका नाता, और वो बाद में इस तरीके से रिजल्ट। तो केवल फिजिकली हमें फिट नहीं होना है, मेंटली फिट होना है, साइकोलॉजिकली फिट होना है। और हम सोशल, मैंने ये सोशल एनिमल कहते हैं, हमें आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो एक दूसरे से हमारे संबंध को बहुत हेल्दी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो स्पिरिचुअल हेल्थ की बात है,
वो ये है कि हमारी लाइफ फुल ऑफ मिथ्स होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें जिसके लिए हम स्कूल कभी नहीं जाते, जैसे योग के यदि आप पढ़ेंगे, अष्टांग योग की विषय है, सुना होगा नाम आपने, 8 लिम्स ऑफ योग, अष्टांग योग। तो उसमें बहुत सी चीजें शुरू में बताई गई, उसको लगा अहिंसा, सत्य, से यदि आप ये सब चीजें करते हैं वास्तव में ठीक है। अब ये बताइए कि कोई क्लास आपने सुना है, आओ अहिंसा करना सीखे, आओ सच बोलना सीखे, ऐसी क्लास होती नहीं। सवाल ये है कि ये चीजें हमारे लाइफ में आए कैसे, वो कौन से तरीके हो सकते हैं। और जब हम इस पर विचार करते हैं ये बात समझ में आती है कि योग की शुरुआत हम कहीं से करें, चाहे वो आसन से करें, से करें, नमस्कार से करें, ये धीरे 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 हमारे लाइफ में जो स्पिरिचुअल कंटेंट है वो आना शुरू होता है। और उसके लिए कोई अलग से क्लास नहीं, लेकिन तरीका यही है कि आप शुरुआत करें। यदि हम हेल्थ के बारे में सिर्फ बुक्स की बात करें, चीजें हमारे पास एक बॉडी, माइंड और इंटलेक्ट। शरीर कैसा चाहिए, परफेक्टली, माइंड टोटली प्यूरिफाइड और इंटेलेक्ट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड। अभी हमारे पास क्या है, शरीर व्याधि मंदिरा, ढेर सारी बीमारियां शरीर, मन कैसा हमारा प्यूरिफाइड नहीं, जैसे वासनाओं से, पराक्रम से, अच्छी भावनाएं नहीं है एक दूसरे के। और इंटेलेक्ट कैसा है, हम डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या नैतिक है, क्या नहीं। तो डुअलिटी में हम, जबकि हमें कैसा चाहिए, इंटेलेक्ट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, एक आत्मा बुद्धि जिसे हम कहते हैं। योग इसी दिशा में हमें आगे ले जाता है। देखिए स्लाइड, हमारे स्पिरिचुअल जो टेक्स्ट हैं, और स्पेशली एक टेक्स्ट है तैतरीय उपनिषद, उससे ली गई ये कॉन्सेप्ट। जिस शरीर को मॉडर्न साइंस एक सिंगल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस समझता है, वास्तव में ये शरीर एक शरीर है, ऐसा योग नहीं मानता। योग का ये मानना है कि शरीर मल्टीपल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, जो दिख रहा है ये ग्रॉस बॉडी है, ये अपने आप चलने वाला नहीं है, इसको चलाने वाला सरल शरीर। जिस तरीके से आप यहाँ स्क्रीन देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है, यदि प्रोजेक्टर बंद हो जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं, और उस प्रोजेक्टर को भी गवर्न करने के लिए सॉफ्टवेयर भी यहाँ से बना होगा। इसी तरीके से हमारा 3 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, एक जो दिखाई दे रहा है, इसको चलाने के लिए 17 एलिमेंट्स, और उससे भी सूक्ष्म आप सभी ने सुना होगा और देखा होगा, जैसे हम देवी देवताओं की फोटो देखते हैं जो अपने आराध्य हैं, जिससे भगवान है, जब हम उनकी फोटो देखते हैं तो उसके चारों ओर पीले रंग का प्रकाश देखते हैं। किसने भगवान को देखा, किसने आराध्य को देखा, नहीं पता, लेकिन फोटो हम देखते हैं और फोटो के किनारे पीले रंग का प्रकाश देखते हैं। लाइट क्या है, लाइट उनकी प्रोजेक्ट दिखाती है। अभी हम सभी के चारों ओर भी एक इनविजिबल एक्सिस्टेंस है, जिससे ओरा या आत्मंडल, और आज किरलियन फोटोग्राफी के माध्यम से हम उसकी भी स्कैन इमेज खींच सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि जो लोग बहुत बैलेंस लाइफ जीते हैं, अच्छा भोजन, अच्छा रूटीन, अच्छी आदतें, उनका जो कारण शरीर है, कॉजल बॉडी है, बहुत एक्सटेंडेड, बहुत बड़ा है, विस्तारित है, पॉजिटिव है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, जाहिर बात है उनकी ये जो कॉजल बॉडी या कारण शरीर श्रिंक है, और वो बहुत अच्छा नहीं है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कई बार हम लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगता है, चाहे उनसे हमारी बात ज्यादा हो चाहे नहीं। कई लोगों से मिलने के बाद बहुत हम अनईजी फील करते हैं, कई बार हम ट्रेवल करते हैं, सब फील कर सकते हैं। बेसिकली ये एक्सचेंज ऑफ ओरा या आत्ममंडल होता है, जब हम किसी के नजदीक होते हैं तो ये एक्सचेंज ऑटोमेटिकली शुरू होता है, और जिसका आत्ममंडल या ओरा जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ज्यादा प्रभावित करेगा। महात्मा बुद्ध के बारे में कहते हैं कि उनका ओरा या आत्ममंडल 3 किलोमीटर लगता है, उसमें जो भी आए वही सुख का अनुभव करने लगता। और मैं इस बात को विश्वास से कहता हूँ कि जैसे जैसे आप इनको सीखेंगे, ये पॉजिटिविटी अपने आप आएगी, आत्ममंडल अपने आप अच्छा होगा, और आप इजी एक्सेप्टेड होंगे, आसानी से स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा तैतरीय उपनिषद में एक और बात कही गई, उन्होंने कहा कि हमारा लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस 5 है। इसके पीछे एक कहानी है, और कहानी में आपको नहीं सुना रहा, लेकिन उन्होंने कहा
एक शिष्य बार बार के समीप जाते हैं और पूछते हैं, अभी और प्राचीन समय में जो चीजें काफी अच्छी थी। पहले जब भी कोई क्वेश्चन या प्रश्न होता था तो माता पिता गुरु के पास जाते, अभी माता पिता गुरु के पास बाद में जाएंगे, गूगल के पास जाएंगे, चैट जीपीटी एआई के पास जाएंगे और बहुत से सवाल पूछते हैं, उसके उत्तर भी मिलते हैं। तो इंफॉर्मेशन तो बहुत सी मिलेगी, अब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन या नॉलेज जितनी है वो एक अलग बात आपको मिलेगी माता पिता गुरु के उनसे उनके संरक्षण। तो इस कहानी में बार बार शिष्य पूछते हैं कि मैं कौन, और ये उपनिषद का जो की क्वेश्चन यही है, हु एम आई। कई बार आपको हमें लगता है जब हम शांत और शांत एकांत जब हम बैठते हैं या हमारे जीवन में कुछ गलत होता है, उस समय जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को देखते हैं, बार बार लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, आखिर मैं हूँ कौन। और कई बार ये भी सवाल होता है, दूसरे तो बहुत गलत है, उनके साथ ठीक हो, मैं तो ठीक ठाक, मेरे साथ ही ऐसा। ऐसे बहुत से सवाल हम अपने आप से पूछते हैं, और इस पूछने में एक बात ये क्वेश्चन रहता है कि मैं कौन। तो उस शिष्य के मन में प्रश्न आया और कई बार वो गए और संक्षेप में दिया ब्लॉग में उन्होंने ये कहा कि मैं कौन। तो उन्होंने कहा कि ये आपको पूछना। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा ध्यानासन में बैठिए, अपने आप से पूछिए। ध्यान से बैठे बैठे उनको लगा ये शरीर जहाँ जहाँ रहता है मेरी वहाँ अटेंडेंस सकती, ये शरीर जहाँ नहीं रहता मैं एब्सेंट हो जाता हूँ या हो जाती है। उन्होंने कहा कि मैं शरीर, उन्होंने कहा ये पूरा नहीं, यह उत्तर आधा। फिर गए साधना करते करते एक बात समझ में आई कि डेड बॉडी में तो शरीर सामने लेटा हुआ है, फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि चला गया और कई बार ऐसी परिस्थिति हम देखते हैं। तो केवल शरीर होना पर्याप्त नहीं है, शरीर का फंक्शनल यूनिट होना जरूरी है, और इस शरीर को फंक्शनल यूनिट बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एनर्जी है उसे प्राण कहते हैं, और इसीलिए डेड बॉडी को कहते हैं प्राणांत हो गया। तो हमारा शरीर होना ही पर्याप्त नहीं है, एट द लेवल ऑफ प्राण भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यह उत्तर पूरा है। फिर गए साधना करते करते एक और उत्तर मिला, मैं केवल शरीर प्राण नहीं, जैसे आप सभी यहाँ जो बैठे हैं उसकी शरीर के साथ है इसमें कोई डाउट नहीं, सभी प्राण के साथ है इसमें भी डाउट नहीं, लेकिन सभी मन के साथ है कहना बड़ा मुश्किल। मन कहीं और ही चल रहा है, जल्दी छोड़े, 5 बजने को आ गया, कितनी बात करेंगे, आज ही सभी लोग सिखाएंगे, ऐसी बातें चल रही है, वो दिखता भी है, होना भी चाहिए। मन का काम यही, मन आपको एट प्रेजेंट रहने ही तो नहीं देगा, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। अभी घर पे जाके कोई बड़ा काम नहीं करना, लेकिन जाना है। तो ऐसी बहुत सी चीजें मन का ये स्वभाव है, होता रहता है। कहा मैं शरीर में मर, उन्होंने कहा उत्तर ठीक है, लेकिन बात आई ये जो मन पास्ट या फ्यूचर में ट्रेवल किया वो वही क्यों नहीं रुक गया, उसको कौन कंट्रोल करता है? मिला ये बुद्धि मन को नियंत्रित करती है, ये बुद्धि जैसा कहेंगे मन वैसा करेगा। आप सभी में से कुछ लोगों ने रिलैक्सेशन टेक्निक योग निद्रा किया है कभी? योग निद्रा रिलैक्सेशन, आंख बंद करके और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को विजुअलाइज करके उसको रिलैक्स करते हैं और उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे आप आंख बंद करके दाहिने पैर के अंगूठे को देखिए और उसको रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए। तो आपको लगता हो कि दाहिने पैर के अंगूठे को देखिए, पहले तो देखा। जैसी बुद्धि कहती है दाहिने पैर के अंगूठे को देखिए, यकीनन आपको उसी समय अंगूठा दिखेगा, उसमें नाक नहीं दिखाई देगी। बुद्धि जो कहेगी मन को वैसे ही करना, मन जैसा कहेगा वैसे ही प्राण चलेगा, और जैसा प्राण काम करेगा शरीर में वैसे ही सेंसेशन या एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने कहा कि मैं शरीर हूँ, प्राण हूँ, मन हूँ। उन्होंने कहा इतना पूरा नहीं, पूरा क्या है? फिर वो बहुत दिन बाद उन्होंने कहा कि अब उनको उत्तर मिल गया, मैं विशुद्ध आनंद, आई एम एब्सोल्यूट ब्लिस। जीवन में हम जो भी काम करते हैं टू अचीव द स्टेट ऑफ ब्लिस, वो भी काम हम कर रहे हैं ना सिर्फ इसलिए कि हमें अच्छा लगना चाहिए, इसीलिए हम कर रहे हैं। और यहाँ तक मैं ये भी कहता हूँ कि एक जेब का तरफ यदि जेब काट रहा है सिर्फ शेप क्यों कर रहा हो, वो वही रहा है तो अचीव द स्टेट ऑफ ब्लिस। जैसे एक एग्जांपल लोग देते हैं कि एक बुजुर्ग महिला काम का वक्त था, अपने छोटे से मकान में सिलाई कर रही थी और सिलाई करते करते वो
कोई गिर गई, गिर जाने के बाद उसमें खोजा, मिली नहीं, लाइट चली गई। लाइट चली गई तो बाहर जाकर के माता रोशनी थी, वहां जाके घूमने लगी। बहुत देर तक उससे बोलते उससे आ रहा व्यक्ति देखा, उसने कहा जाकर बोला क्या हुआ? सुई गिर गई। जाकर के वहां सुई खोजने लगा, मिली नहीं। उसने कहा कि और देर से मैं भी देखा, मिली नहीं, गिरी कहाँ? ये एक्सेप्ट बताओ। उसने बोला कि झोपड़ी में गिरी। तो यहाँ क्यों खोज रहे हो? यहाँ तो रोशनी है ना, लाइट है। तो ऐसे ही हम आप कर रहे हैं, जहां गिरा, जहां से दुख उत्पन्न है उस पर चर्चा नहीं हो रही, हम कहीं और इस होने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बात को इंडिकेट करें। और इसीलिए जो 5 लेवल है हमारे शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और मानव, इन पांचों के लिए हम एक प्रोटोकॉल या प्रैक्टिसेस पर काम करते हैं। और योग की जितनी भी क्लासेस आपने देखी होगी, जितने भी क्लासेस में कह रहा हूँ, हमारा बेसिक ड्राफ्ट 4 चीजों पर फोकस होगा। जो प्राइम कंसर्न है योग सीखने का वो है ब्रीदिंग रेक्टिफिकेशन, श्वास में सुधार। जो श्वास की बात मैंने की, और इस बात को भी आप शायद निश्चित रूप से जानते ही होंगे कि जो ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेशन रेट पर मिनट है ना, यही हमारी लाइफ स्पैन को डायरेक्टली रिलेटेड है। हम आप सुनते आए हैं बचपन से कि हमारा जीवन 100 ईयर्स, 100 साल, और किन्हीं कारणों से हम पहले भी इस तरह की दिक्कत होती है। लेकिन एक आपको एक्सपेरिमेंट करा, सभी सीधे बैठिए, आंख बंद कर लीजिए, सिर्फ 1 मिनट का समय दूंगा। आपको अपना नॉर्मल ब्रीदिंग काउंट करना, श्वास को लंबा नहीं करना, छोटा नहीं करना, इजी ब्रीदिंग जैसे चल रही है चलने दें, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट को 1 काउंट करना, और जब मैं काउंट शुरू करिएगा और जब मैं काउंट तो बात कर दीजिए। और आपका समय काउंट कर पाए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को, ब्रीथिंग रेट पर मिनट। कितने लोगों की ब्रीदिंग मोर देन 30 थी? कितने लोगों की बिलो 30 मोर देन 20? कितने लोगों की लेस देन 20? किसकी लेस देन 10? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम सबकी जो लाइफ है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड टू आरआर है। और इसको सर्च कीजिएगा, रेस्पिरेशन रेट पर मिनट नॉर्मल है 15, ह्यूमन बींग्स का 15, और इसके हिसाब से 24 आवर्स में हम 21,600 श्वास लेते हैं। लेकिन ये आरआर अलग अलग कारणों से, कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत अलग अलग उसके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बढ़ता, मतलब वो 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35, 40। लेकिन ये ध्यान रखिए, बात अभी की नहीं है, हमेशा ही ब्रीथिंग रेट को ऑब्जर्व करिए अलग अलग टाइम में। और यदि आरआर बहुत ज्यादा है तो इसका ज्यादा काम करने की जरूरत, हम बीमारी के उतने नजदीक हैं। आरआर जितना कम है हम उतने साउंड हेल्थ के, इस बात को बहुत ही समझिए। और टेक्स्ट भी यही कह रहा है कि जिसका आरआर ज्यादा है उसका लाइफ स्पैन कम। चूहे को देखिए, उसकी श्वास 70-80, ये आरआर जो है 80-100 के आसपास। और कल किसी चूहे को बहुत ध्यान से देखिए, बस चुपचाप उसको देखते रहिए। ऑल द रैपिड ब्रीदिंग, बहुत तेज श्वास, लाइफ स्पैन कितना? बहुत कम,
साल 2 साल मुश्किल से। कुत्तों को देखिए, उसका ब्रीदिंग रेट बहुत तेज, देखते हैं कैसे जल्दी 30 साल, लाइफ स्पैन 10-12 साल। ह्यूमन बींग्स का हमने बताया इसके हिसाब से। और कछुए को यदि देखिए आप, उसका ब्रीदिंग रेट 3 to 5 है। उम्र कितनी है? 200 से 300 साल। बहुत से साइटेशन ब्रीदिंग में छिपे हैं, और इसीलिए योग का जो प्राइम कंसर्न है इस ब्रीदिंग के लिए अवेयर होना, इस ब्रीदिंग को कोऑर्डिनेट करना, रेगुलेट करना, करेक्ट करना, मिनिमाइज करना, नेचुरली मिनिमाइज करना। और इसके लिए बहुत सी प्रैक्टिसेस है। तो प्राइम कंसर्न हमारा ब्रीदिंग है। और जैसे 1 मिनट जैसे आप काउंट कर रहे थे ब्रीदिंग, उस समय घर की याद आई। एक समय में एक ही काम होगा। जिस समय आप काउंट कर रहे हैं तो उस समय घर भूल गए। मन एक समय में एक ही काम करता है, एक समय में 2 काम हो नहीं सकता। तो इसलिए हमें इसको समझना। दूसरा, हम सेल्फ रेक्टिफिकेशन से ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें शेड्यूल से ही गवर्न होती है। यदि हम सूर्योदय के बाद जितना लेट उठते हैं उतने बीमारी के नजदीक, जितना जल्दी उठेंगे उतने हम स्वस्थ होने की हमारी पॉसिबिलिटी संभावना ज्यादा है। और अभी तो यंग एज में आप बच्चे हैं, शायद इस चीज को बहुत एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन डेज टू कम आप धीरे धीरे इस बात को फील करेंगे। और ये बड़ी सीधी बात है, जो सनराइज के पहले उठ के स्नान आदि कर लेते हैं वो फिटेस्ट फिट लोग रहते हैं अधिकांश संभावना। और जो लेट उठते हैं, लेट राइजर्स, 10 समस्या उनके जीवन का हिस्सा होना है, खास करके डाइजेशन रिलेटेड इशू होना 100%। तो शेड्यूल रेक्टिफिकेशन भी योग में बहुत जरूरी है। तीसरा है डाइट रेक्टिफिकेशन या मॉडिफिकेशन। आहार कैसा, जैसा खाए अन्न वैसा। और फिर कुल मिलाकर के एक प्रैक्टिस हम सभी डिजाइन करते हैं। प्रैक्टिस का एक प्रोटोकॉल होता है। योग कभी भी ऐसे मत सीखिए कि 1-2 प्रैक्टिस करने से बात बनेगी, होगा नहीं। एक प्रोटोकॉल बनाना है। प्रोटोकॉल का ड्राफ्ट इस तरीके से होता है कि आप उसको अच्छे तरीके से प्रेयर से शुरू करें। फिर कुछ अभी फोटोग्राफ देख के आप समझ पाएंगे। कुछ क्लीनिंग प्रैक्टिसेस करें, फिर कुछ ऐसे शरीर के अलग अलग अंगों को क्रियाशील बनाने के तरीके। सूर्य नमस्कार एक बड़ा पॉपुलर प्रैक्टिस है। बहुत से योगासन, प्राणायाम ऐसे करके बहुत से अभ्यास। अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योग 21 जून को आप सभी कुछ ना कुछ अभ्यास करते हैं। वो अलग बात है कि बहुत से लोग टी-शर्ट और मैट के लिए अभ्यास करते हैं, लेकिन करते हैं, अच्छी बात। उसमें आपने देखा कि 40 मिनट्स का प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल में ये सारी बातें, एक अच्छा प्रोटोकॉल आप उसको भी कर सकते हैं। और जिसे कॉमन योग प्रोटोकॉल कहते हैं, तो आप वेबसाइट पर आराम से उसको सर्च करके देख सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया है। 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे हो। इस दिन मेडिटेशन की बहुत अलग अलग टेक्निक्स को हम जानते, समझते और सीखते हैं। और ये जो मेडिटेशन के नाम पर जो एक बड़ी मार्केट है, आपको बताऊं, मतलब अच्छा मार्केट है। और इसमें काफी लोग खर्च भी करते हैं, जबकि ध्यान के लिए बहुत सरल सरल टिप्स हैं। यदि आप उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, मैं नहीं समझता आपको उससे कहीं जाने की जरूरत। और जहाँ जाने की जरूरत है उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। ये 2 दिन हम देखते हैं। और योग की जब भी बात होगी, हमेशा प्रेयर, अच्छे मन से। बिना प्रेयर के तो योग की बात ही शुरू नहीं। इसीलिए प्रेयर एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चीजें आपने कभी सुना या देखा? ढेर सारा पानी पी के वॉमिट करना, ये इसे कुंजल कहते हैं। जैसे हाथी ढेर सारा पानी पी के सूंड से बाहर निकाल दे, ऐसे एक सिस्टमेटिक तरीके से हम सीख जाए तो जितने भी आईबीएस प्रॉब्लम है या जीआईटी डिसऑर्डर्स है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, इंडाइजेशन है, वो सबका सीधा सीधा असर इस क्रिया से अच्छा हो। सेकंड जो आप देख रहे हैं वो एडवांस प्रैक्टिस है। वो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं। और एक विशेष प्रकार का वस्त्र, वो ऐसा कपड़ा नहीं, अलग तरह का होता है का, उसको पट्टी 16 हाथ अंदर लेने के बाद थोड़ा हिस्सा छोड़ते हैं और फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। तो अनेक प्रकार के स्किन डिजीज और जो एस्थमेटिक पेशेंट्स जिन्हें अस्थमा या दमा होता है, जिनका ब्रीदिंग डिजीनेस होता है, उन सब के लिए ये विशेष अभ्यास है जो हमारे यहाँ आज है। ये भी आपने सुना और देखा होगा कि मसल्स में थ्रेड डाल के, धागा डाल के और मुंह से निकाल के, ये जो साइनसेस है, बेसिकली ये साइनसेस एक हॉलो स्पेस है। और यहाँ कई बार म्यूकस आदि एकोमोडेट होगा, इकट्ठा होगा, तो हमारी ब्रीदिंग स्मूथ नहीं। मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, आराम से करूंगा नहीं, वो अलग बात है।
जैसे अभी सब बच्चों को बोला जाए कि खूब तेज श्वास फेंकिए, बच्चे श्वास के साथ कुछ और ही निकल जाए। नाक साफ नहीं है हमारी, नाक भरी हुई है। तो योग में तो हर छोटी बात पर चर्चा हो, नाक साफ करना। खूब तेज श्वास लेंगे तो आप देखेंगे केवल श्वास नहीं कुछ और भी आ रहा है, नाक साफ करने। जब तक ब्रीदिंग स्मूथ नहीं है हम हेल्दी हो ही नहीं सकते, हम अवेयर नहीं हो सकते। तो ये बहुत जरूरी है साइनसेस को क्लीन करने के लिए। लेती और जल लेती आदि क्रियाएं सीखते हैं। कई बार ये मिरेकल साइंस की तरह इसका प्रैक्टिस और टीचिंग होता है। मुझे याद है मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ और जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था, बीएचयू से पढ़ा लिखा, तो 1 महीना में पीछे दौड़ा के सीख, तब जाकर के उन्होंने जल लेती सिखाया, जो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आप सीख। रेगुलर प्रैक्टिस करें, लाइफ लॉन्ग सर्दी जुकाम से दूर रहेंगे और नाक बिल्कुल साफ रहेगी, मन बिल्कुल शांत रहेगा, फोकस रहेंगे। कितनी सरल सरल प्रैक्टिस है। नाटक के बारे में आप सभी जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए कपालभाति का अभ्यास करते ही होंगे या जानते होंगे। ये कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस है। ऐसे कुछ बहुत से सरल अभ्यास है। मुझे एक बार अवसर मिला, कई बार जब 94 ईयर्स से किसी लेडी को हमने योग सिखाया। क्या सिखाएंगे? तो उसमें भी योग की बहुत सी प्रैक्टिस है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी हेल्थ स्टेज के हो, किसी भी एज के हो, आपके लिए योग के कोई को ऑप्शंस अवेलेबल है। तो बात में जो मैंने दिखाया वही नहीं करना, बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन। सूर्य नमस्कार आप जानते हैं, इस अवस्था में जिस यंग एज में आप कम से कम 5 to 10 राउंड सूर्य नमस्कार रोज कर लें, और देना है, लेकिन वो करना होगा, सिस्टमेटिक सीखना पड़ेगा। और इसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी डायमेंशन के अलग अलग आसन का सिलेक्शन, एक ही सीरीज के ढेर सारे आसन नहीं करने, हर ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव आसन आदि पर प्रैक्टिस करते हैं। और फिर कुछ प्राणायाम जरूर, क्योंकि एक योग में सूत्र है, चले बातें चले चित्तन में चले निश्चलम वेद। ये जो हमारा ब्रीदिंग है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू हमारा साइकी, मन, श्वास और मन बिल्कुल जुड़ा हुआ। जैसा मन काम करेगा वैसे श्वास चलेगी, या श्वास को जैसा चलाएंगे वैसा मन काम करेगा। कई बार आपने देखा होगा जब आपको कभी क्रोध आए, गुस्सा आए, उस समय आपकी ब्रीदिंग कैसे होती है? धीरे आती है, बहुत तेज, बहुत फास्ट। और उस समय तो कहते हैं पानी पीना चाहिए। किसी क्रोधी आदमी को जो गुस्सा है, कहते हैं गिलास पानी दीजिए। पानी से गुस्सा शांत नहीं होता। जितनी देर आप पानी पीते हैं ब्रीदिंग सस्पेंड रहती है, और जैसी ब्रीदिंग सस्पेंड होती है मन को शांत होना निश्चित। जैसी ब्रीदिंग वैसा मन। बहुत सी चीजें हम कई बार अननोनली करते हैं, जिससे हमें बहुत आसानी से सीखना और समझना है। और इसीलिए हमें ब्रीदिंग फोकस होकर बहुत सा अभ्यास प्राणायाम आदि करना है, तो ध्यान के अभ्यास करते हैं। और वास्तव में जो हम 1 घंटा अभ्यास करते हैं, आधा घंटा या घंटा भी है, ऑन द मैट जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है उसका असर ऑफ द मैट, उसका असर हमारे लाइफ स्टाइल पर होना चाहिए, डे टू डे बिहेवियर होना चाहिए, पूरी दिनचर्या पर, रूटीन पर। बहुत जरूरी बात है। और इसीलिए योग में बहुत से साइटेशंस हैं। एक सूत्र ऐसा कमाल का है कि हम मेंटली कैसे हेल्दी रहें, उसके लिए इन्होंने कहा कि देखिए समाज में 4 तरह के लोग, सुखी, दुखी, पुण्यात्मा, पापात्मा। सबसे एक सा व्यवहार नहीं करना। योगियों को पता है, साधकों को पता है कि सुखी व्यक्ति से मित्रता, दुखी व्यक्ति के लिए करना, और पुण्य आत्माओं के लिए प्रसन्नता, और जो पापाती है, जो दुष्ट आत्मा है, जो उनसे क्या करना है? समता का व्यवहार। समता का मतलब बिना प्रभावित हुए अपने काम को करिए, उनसे ज्यादा प्रभावित देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हम एक बात कहना चाहते हैं कि योग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ प्रैक्टिस, एक कोई एक तो प्रैक्टिस नहीं है, एक उसका एक प्रैक्टिस बनाइए, प्रतिदिन अभ्यास करिए। ब्रीदिंग अकाउंट एक सबसे जरूरी बात है कि जैसे हमने कहा कि 15 श्वास हम बस 2 मिनट और, जैसे हम 15 श्वास लेते हैं 1 मिनट में, यदि हम उसको प्रैक्टिस से कम करें, होती 15 से 13 होगी, 12 होगी, 10 होगी, जितनी श्वास हम बचाते हैं हमारा जीवन उतना ही लंबा और स्वस्थ होता है। तो हमें ब्रीदिंग अकाउंट खोल करके इसको सेव करना है, और बीच बीच में रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना, योग निद्रा उसे कहते हैं। और बहुत से अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स में एक टेक्निक है विपस्सना मेडिटेशन। आप कभी भी जाके सर्च कीजिएगा,
www.dha.gov फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री रेजिडेंशियल आपको वहाँ रहने की सुविधा होगी। 10 डेज का रेजिडेंशियल कैंप है, आप जाके सीख सकते हैं, कोई चार्ज नहीं, लेकिन 10 दिन आपको वहां से निकलना नहीं। सबसे बड़ी बात है 10 दिन आपको बात नहीं करनी है, तो वो सब एक अलग प्रैक्टिस है, आप जाके सीख के देखते हैं लाइफ सी अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। और इसीलिए स्वामी दयानंद ब्रह्मचारी जी बार बार ये कहते थे योग जानने का विषय नहीं, प्रैक्टिस का, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप समझ पाएंगे। हमारे यहाँ से बहुत से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलते हैं, 1 मंथ के ऑफलाइन ऑनलाइन की प्रैक्टिस, 3 मंथ 6 मंथ, 1 साल का कोर्स, 3 इयर्स का बीएससी और 2 साल का एमएससी कोर्स, डिप्लोमा के है। इसके अलावा बहुत से नॉन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी जो ट्रेनिंग के लिए आप सीखना चाहते हैं, 1 घंटे की क्लास होती है। सोशल मीडिया जो हमारे प्लेटफॉर्म है उस पर आप उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने समय का पूरा ध्यान रखा है और विशेष धन्यवाद मैडम रिचा जी को और मैडम सारिका जी को, जिनके प्रयास से ये आज का कार्यक्रम हो सका। मुझे नहीं पता कि मैं कितना अपनी बात कह पाया, आप तक कितनी गई, लेकिन आप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो सुना ही, और जो सुने हैं वो आज नहीं तो कल काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपको प्रशासन को, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो सका। बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक पेंटिंग और 3 बार शांति की करिए श्वास। हम हाथ कहते हैं कि कर रहे हैं, पल को पल बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। Thank you so much, sir. It was a very inspiring, very motivating session to start physical activities, correct? Okay, thank you so much. So let's give a huge round of applause for that. Thank you so much for some patience, although it was not required. Thank you. कंप्लीट हो गया ना मैम? मैडम लॉग आउट कर लीजिए।